Hello. Hi students, this is OSN Academy of English. I am Dr. Anurag Agarwal, and today I am again going to take the second session on important works. And the best part of this session is that today what I am going to teach is asked in all the examinations of Pan India, that is literature. You may take the examination of the lowest to the highest, Chaucer is always there. And if it comes to Chaucer, then 100% Canterbury Tales. I'm very much sure, right from the BA Part 1 up to the MA or any examination, you require the details of Canterbury Tales. So today I thought to take a work from my own book, which का नाम है Important Works. I have my own book written, जिसका नाम है Important Works. And this is actually a wonderful work where I have given a lot many collections from the entire literature. And this is one of the piece of Canterbury Tales today, which I am going to teach you, and how I teach, how it will be going into your subconscious mind कि examination में कोई भी question आए आप आराम से attend कर लें. And before I start this session, students, just come live to my channel, just subscribe and press the like button if you like the channel. And yes, there are so many batches which have started now. The bilingual live batch which is running at 5 p.m. evening. So those students who wish to be a part of my live classes evening, they may join the live classes. Those who want to join the recorded batches, if they are in the jobs or family or they don't have time to come live, they can join the recorded batch. Sabki validity 1 year hai. Apart from these bilingual batches, recorded and live, which I am giving to the Pan India students, the other batches are the Gujarat set. You will get the Gujarat set, and then you will be getting the Chhattisgarh set, you will be getting the Karnataka set, you will be getting the UPSC batch of 2024 and 2025, you will be getting the study material of all the batches, TGT, PGT, JL Telangana and Uttarakhand and so many other batches which you can see from my OSN Academy application. आपको सिर्फ इतना करना है कि OSN Academy के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके you can see the wonderful arena and the entire boutique of English literature examinations. So now let us start the Canterbury Tales. और Canterbury Tales की शुरुआत कब हुई थी students? That is about 1387. That is the most famous poem, and this is also known as the unfinished. The most important point, which if you are not knowing, the unfinished collection of tales, an unfinished collection of tales. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये अनफिनिश्ड है या फिनिश्ड है. इट इज एन अनफिनिश्ड. रिमेंबर दिस लाइन, अनफिनिश्ड. एंड दिस इज द अनफिनिश्ड कलेक्शन ऑफ सो मेनी टेल्स, जिसको कि बताया गया है इन द कोर्स ऑफ अ पिलग्रिमेज. ड्यूरिंग द कोर्स, जब रास्ते में थे, ऑफ अ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज तो आप समझते होंगे कि लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करने. अपने अपने पिलग्रिमेज होते हैं, हर धर्म में अपने अपने उनके पिलग्रिमेज होते हैं. सो ये जो कहानियां बताई गई थी, ये उस कोर्स के दौरान बताई गई थी, उस रास्ते के दौरान जब वो सारे लोग एक पिलग्रिमेज में जा रहे थे. और कहाँ जा रहे थे? बेकेट्स श्राइन एट कैंटरबरी. बेकेट्स श्राइन एट, सी मतलब कैंटरबरी. फाइन. And yes, it is written by Godfrey Chaucer. This is very simple, everybody knows it. Good afternoon, Chandan. Now, a general prologue briefly describes the 30 pilgrims. Generally describes the 30 pilgrims and introduces the framework. And what is that framework? That each pilgrim will tell 2 tales on the way to Canterbury and 2 while coming back. And the teller of the best tale, जो कहानी सबसे अच्छी बताएगा, that person will win a free supper. So, आपको कितने टेल्स मिले बच्चों? कोई बता सकता है मुझे? How many tales you get in this Canterbury Tales? Any idea? 24 tales.
you get 24 tales including 2 told by Chaucer himself, जिसमें 2 हम लिख देते हैं Chaucer himself, मतलब 24 में से 2 तो चौसर का है, तो टोटल 22 टेल और लोगों ने बताया। फाइन, सो यहां तक क्लियर हो गया, बहुत आसानी से आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया। नाउ आई विल मूव इन द नेक्स्ट। I am very much sure that after completing this session, you will be having an authority on the Canterbury Tales. Now, if I talk about the general prologue introduces the pilgrims as they meet at which inn? At the Tabard Inn. हर वो पॉइंट हम आपको बताते जा रहे हैं जो आपको लिखना होता है, बोलना होता है, या जो MCQs में पूछे जाते हैं। पहले, बहुत पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था, अब नहीं आता है कि कौन सा वो इन था, कौन सी जगह थी। दैट वाज टैबर्ड इन, एंड दैट वाज इन साउथ वर्क, ये जगह का नाम है। वेयर? इन साउथ वर्क, एंड दे बिगिन देयर जर्नी अंडर द गाइडेंस ऑफ द होस्ट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट? I am very much sure you all might be knowing that is Harry Bailey. The name of the host was Harry Bailey. पहले ये भी क्वेश्चन आता था कि हैरी बैली कौन है, ठीक है। Now, these pilgrims who are going for the pilgrimage, they are actually coming from all the different sections of society. Some are, given the description, described in a very realistic manner, in a very vivid manner. Somebody combining the elements of the traditional representation of social types with individual characterization. Now, my dear students, I am going to tell you, or teach you rather, those names which are of utmost importance if you are reading the Canterbury Tales, that is the prologue. And that is, number 1 पे आता है students, the Knight's Tale. Very important. The Knight's Tale. You will find many questions coming from this character, the Knight's Tale. And the Knight's Tale is basically a romance based on, ये किस पे based है? Can anybody tell me? बच्चे हमारे साथ लाइव कितने हैं इस समय? Just give me a thumbs up, just give me a hands up like this. The Knight's Tale क्या है? It is a romance based on Boccaccio's Tissida. Boccaccio's Tissida, Tiessada. The Knight's Tale is a romance based on Boccaccio's Tissida. Now, Palamon and Arcite. Palamon and Arcite, ये नाम ध्यान रखिएगा. Palamon and Arcite. Who are Palamon and Arcite? Palamon and Arcite, sworn brothers. They became rivals for Theseus' niece. For Theseus' niece. उसकी भतीजी के लिए दोनों आपस में दुश्मन हो गए, और नीस का नाम था एमिली, EMELYE. ये दोनों लोग थीसिस नीस एमिली के लिए आपस में दुश्मन हो गए. whom they first see from their prison window. इन लोगों ने उसको अपने जेल के खिड़की से देख करके उससे वो प्यार कर बैठे और दोनों आपस में लड़ गए. So that is in short about the Knight's Tale. Fine. Any questions here about the Knight's Tale? Now, the second which I am going to tell you is the Miller's Tale. The Miller's Tale. What is this Miller's Tale? Miller's Tale is actually a body fabuloi, a BAWDY, body fabuloi. It is a body fabuloi told by drunken and quarrelsome character. Drunken means पीने वाला, quarrelsome means लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति. So that is the Miller's Tale. Now we come to the Reeve's Tale. The Reeve's Tale. The Reeve's Tale क्या है? The Reeve's Tale basically answers the Miller's abuse of carpenters. For the Reeve is himself a carpenter. क्यों? क्योंकि ये खुद carpenter है. And it tells how a Miller is tricked by two clerks whom he has cheated.
one sleeps with the miller's daughter and the other rearranges the furniture so that the miller's wife gets into his bed instead of her husband's. So that is the story of the Reeves, the Reeves tale. Fine. Now, the next which I am going to tell you about the tale is the cook's tale. आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपने इसको इस तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ा होगा. द कुक्स टेल. Generally, the students, they leave the Canterbury Tales. That is why I've incorporated in my works book. Fine. Good afternoon, all of you students. The Cook's Tale. And what is this? It is only a 57-line fragment. Note it down. 57-line fragment. It is a 57-line fragment whose opening, जो अब open होता है, it tells how an apprentice loses his position because of righteous living and moves in with a prostitute and her husband. So that is the story of the Cook's Tale. Fine. Now, now students, हम आपसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे. द मैन ऑफ लॉस टेल. See, a very important tale. How many of you have heard this tale? हमें आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है. बच्चों, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना चाहें तो जैसे हमने आपसे पूछा कि ये क्या है, ये आपने कभी सुना है कैंटरबरी टेल्स में? द मैन ऑफ लॉस टेल. it actually begins with the second fragment of the poem. फ्रैगमेंट समझते हैं, पार्ट्स. तो ये जो मैन ऑफ लॉस टेल है, दैट बिगिंस द सेकेंड फ्रैगमेंट ऑफ द पोएम. After a prologue complaining that Chaucer has spoiled all the good stories and announcing his intention to speak in prose, the man of law tells the tale of unfortunate Constance. Good afternoon, Sachin and Rems. Fine. And this girl, this Constance, she is married to Sultan. Constanc. Married to Sultan. She is married to Sultan, converted to Christianity. Whose evil mother destroys all the Christians in the court and sets the widowed Constance adrift in a boat. So क्या होता है जब वो समुद्र में जहाज में चली जाती है? She lands in Northumberland. वो किनारा पाती है नॉर्थम्बरलैंड में, where she performs miraculous cures, survives a false accusation of murder, and marries the king whom she has converted. Fine. Now, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपने शायद सुना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, और वो है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल. हाउ मेनी ऑफ यू हैव यू हर्ड और पढ़ा है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम और रेड दिस नेम इन योर बुक्स? जिन्होंने भी पढ़ा है एक वाई लिख करके भेजे मुझे. यस सर, आई हैव रेड और आई नो. Because she is actually a very important character, and the wife of Bath's tale begins with the third fragment, तीसरा fragment. Its prologue to the Canterbury Tales, जैसा कि नाम है, its prologue develops the wife's strong and pleasure-seeking personality as she is recounting her eventful life with 5 husbands, and her tale. A version of, उसका वर्जन है ये, The Wedding of Sir Gawain and Dame Ragnall, continues the theme of women's mastery over men. ये है The Wife of Bath's Tale. Fine. Okay, रूपाली, आपने नहीं पढ़ा है. But these are very important characters and stories of the Canterbury Tales.
if you all preparing for the examination point of view, I am very much sure कि आपको ये आना चाहिए. Fine. Now इसके बाद आता है the friar's tale. How many of you have heard the name of the friar's tale? बच्चों, friar's tale ये क्या है? This is an animated and original version of a fableau from an unknown source, and this is an attack on the summoner. It is an attack on the summoner. Summoner आपने पढ़ा होगा in Canterbury Tales. Attack on the summoner. Now इसके बाद आता है the summoner's tale. The S में शॉर्ट में लिख देता हूं. The summoner's tale. This tale answers the friar with another fableau from an unknown source about a corrupt friar who angers a dissatisfied benefactor by asking for more donations. So that is what is the summoner's tale about. Now comes the next is the clerk's tale. Have you heard this character? The clerk's tale, a very important name in itself. The clerk's tale. The clerk's tale actually जैसा मैं एक फ्रैगमेंट में आपको बता रहा हूं, फ्रैगमेंट में ये आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पे. बिगिनिंग द फोर्थ फ्रैगमेंट gives a version of the folk tale of the patient Griselda, derived from Petrarch's Latin translation of Boccaccio's version of it, in which of the work, that is Decameron. Now comes the merchant's tale. Merchant's tale, which has its source in the folk tale, richly elaborated and expanded. That is the merchant's tale. Then comes, कम से कम इससे आप इस सेशन से आपको कैरेक्टर्स और टेल्स से रूबरू हो जाएंगे, अदरवाइज शायद कभी भी आप इन चीज़ों से रूबरू भी नहीं हो पाते. द स्क्वायर्स टेल एट द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ फ्रैगमेंट इज एन अनफिनिश्ड रोमांस. क्या है ये? एक अनफिनिश्ड रोमांस है, सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ क्लियोमेट्स. क्लियोमेट्स जो स्टोरी थी उससे सिमिलर है, सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ क्लियोमेट्स. इसके बाद बच्चों आता है एक टेल जिसका नाम है द फ्रैंकलिन्स टेल. कितने बच्चों ने सुना है नाम ये? द फ्रैंकलिन्स टेल. The Franklin's tale is introduced as a Breton lay. It is introduced as a Breton lay, but its source is in Boccaccio's Filocolo. Now comes the physician's tale. Fine. And this is the first in the sixth fragment, which adopts the story of Virginia rather than surrender her to the judge Appius. His corruption uncovered, Appius is imprisoned and kills himself. His conniving servant Claudius is exiled. Then comes the pardoner's tale. See how many tales I am telling you. What is this? It is a precede by a prologue in which he is explaining how he is preaching against all types of sin, but himself indulging in various types of evils, in vices, and begs from the poor. Beg भी किससे कर रहे हैं? Poor लोगों से ही beg कर रहे हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स आता है the shipman's tale. The shipman's tale. The shipman's tale, which begins with the seventh fragment, is again a fableau. The merchant's wife borrows 100 francs from the monk, who in turn borrows it from her husband. And in the merchant's absence, उसके ना रहने पे, his wife and the monk, they sleep together.
on the return, the monk tells him he gave the money to his wife. She tells her husband that she thought it is a gift and spent on the clothes. So this is what was the shipman's tale. इसके बाद आता है the prioress tale. prioress का नाम सुना है आपने? prioress, the prioress tale. The prioress tale actually, follows the host कौन था? हैरी बेली. The prioress tale follows the host's polite request to her to speak next. A Christian child is murdered by the Jews, but the virgin gives his body the power of song to reveal his whereabouts and explain how he came to his death. Now, then comes Sir Thomas. Sir Thomas is the first tale of Chaucer's tale, a splendid, pastiche of verse at its most trite. And yes, how can we forget the monk's tale? बच्चों, आपको ये सेशन जो है, आपको हमें पूरी उम्मीद है कि आपको कभी भी टेल के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा. Nobody might have told you about the Chaucer's tale. And yes, टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और बच्चों, जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, लेकिन किसी ने भी शायद लाइक का बटन नहीं दबाया होगा या भूल गए होंगे. तो हमें उम्मीद है कि आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे अगर आपको लगे कि हाँ सर इज़ डूइंग हार्ड वर्क फॉर अस टू टीच दोज इम्पॉर्टेंट वर्क्स. क्योंकि बहुत बच्चों का ये मेरे पास मैसेज आया कि सर इम्पॉर्टेंट वर्क्स का हमें सेकेंड सेशन चाहिए. सचिन, यस, हमें बेटा हमारे चैनल पे बस एक खास बात है कि हम सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं, सिर्फ एग्जाम की, how to qualify and to give you the best content and to provide you the necessary equipments to qualify from right from TGT to IAS. हमारे सिस्टम में कोई ग्लैमर नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई सेल्स नहीं है. इट इज़ ओनली कंटेंट एंड क्वालिटी. And I always tell the entire country students not to waste their time. और अगर हमने कोई जुनून कर लिया कि हमें ये वाला सेट निकालना है, ये नेट निकालना है, ये IAS निकालना है, and if I understand that yes, Dr. Agarwal sir is actually a professor, a teacher who can give you that level of command and experience and expertise and content, then one should never wait and should never while off your time. Am I right? अगर मैं सही कह रहा हूं बच्चों, और यही रीज़न है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को एंटरटेनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है. प्लीज़ एंटरटेनमेंट से थोड़ा बाहर आइए. हाउ टू डिवाइड इंग्लिश लिटरेचर, ड्रामा एंड हाउ टू स्टडी सर. देखिए, इंग्लिश लिटरेचर ड्रामा को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो बैचेस हैं, हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है, ये है रिकॉर्डेड बैच, और ये है लाइव बैच जो 3 दिन पहले शुरू हुआ है. तो हम पहली यूनिट जो ड्रामा लेते हैं, ड्रामा में सारी वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो डिवीज़न ऑटोमेटिक हम पढ़ाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टार्ट विद द एंग्लो सैक्सन पीरियड just for the introduction of it, then I directly come to the drama portion जहाँ से शुरुआत हुई थी. Then I actually go age wise. For example, इनका नाम क्या है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? सुरेखा शिंदे. सुरेखा शिंदे जी, बाई चांस हमारे पास सारी देखिए बुक्स भी हैं. These are all my books which I have written with my experience of 25 years. अब बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपने पूछा सुरेखा जी, ये देखिए, ये है कि दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू ड्रामा, सारा पोर्शन उसमें डिवाइडेड है. देखिए, और ये तो हमारी बुक है. अदरवाइज जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में अपने पेड बैचेस में, वो इसको देख के नहीं पढ़ाता हूँ. ये कंटेंट आपको अलग से मिल रहा है. व्हाट आई टीच इन माय क्लास इज एक्सटेम्पोर लेक्चर्स व्हिच आई हैव बीन टीचिंग पास्ट 25 इयर्स. सो वो जो ब्रेन की नर्चरिंग है, दैट एक्चुअली गिव द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. ये देखिए, तो सुरेखा शिंदे जी, मैं आपको बताऊं कि देखिए, पहले है अ प्रेफेस टू ड्रामा, देन है ओके बेटा. देखिए सुरेखा, ऊपर देखिए, ऊपर स्क्रीन पे आपको नंबर दिखेगा.
उस सचिन जी और सुरेखा जी, ऊपर दिखे नंबर दिखेगा आपको स्क्रीन पे, इस नंबर पे अपना नाम लिख करके अपना क्वेश्चन और लिंक मंगा लीजिएगा, जिससे कि आप सारी चीजों को ऑटोमेटिक देख पाएं और कोई भी काउंसलिंग हो वो ले सकते हैं। सुरेखा जी, अभी आई जस्ट टोल्ड यू दैट, सी ऊपर स्क्रीन पे ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आप लिखेंगे कि मैम आई एम सुरेखा शिंदे, I was just connected on my YouTube channel, so kindly give me the recorded batch link and the app link. Fine. तो देखिए बेटा, ये देखिए आप सुरेखा को बता दें, द एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, रेस्टोरेशन ड्रामा, मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा, ड्रामेटिस्ट, पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट, इंडियन ड्रामा इन थिएटर, and then African dramatist. In the same way, you will be covering the entire drama and poetry. So you will be getting the entire lectures with all my experience, and that will be amazing for you. Thank you, Surekha. Sir, I want to purchase all literature book with written by you from here. Chandan, again I am telling you the number is given on the screen. इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम लिख के कि सर आई एम चंदन, मैम आई एम चंदन, एंड काइंडली प्रोवाइड मी द डिटेल्स ऑफ द बुक सो दैट आई कैन परचेज. फाइन. तो ये देखिए, बाई चांस हमारे पास बुक्स हैं, ये देखिए ऑल दीज बुक्स, दीज आर इन हार्ड कॉपीज. ऑल दीज यूनिट्स जो बच्चे देख पा रहे हैं वो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं. दीज आर ऑल द 10 यूनिट्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड एवरीथिंग. सबसे अच्छी बात यह है कि एक बुक हमारी लॉन्च हुई है जिसका नाम है पेपर 1. सी, यूजीसी नेट पेपर 1, दिस इज द टेस्ट सीरीज. तो जो बच्चे भी इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहें, केवल इसको, ये क्योंकि कोई भी विभाग के बच्चे ले सकते हैं, तो दिए गए नंबर पे ले सकते हैं. ऑफलाइन बच्चे भी ले सकते हैं, ऑनलाइन बच्चे भी ले सकते हैं, बाई पोस्ट मंगा सकते हैं. फाइन. एनी मोर क्वेश्चंस? तो आपने देख लिया कि लाइव की एक अलग वैल्यू है और रिकॉर्डेड बैच की अलग वैल्यू है. तो आज शाम को 5 बजे हमारी क्लास लाइव होने वाली है पेड बैच में, द पेड बैच. लेकिन आज जो भी बच्चे हमारी लाइव क्लास को 5 बजे फ्री एक्सेस करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू एक्सेस टुडेज लाइव बैच एट 5 PM फ्री ऑफ कॉस्ट टू सी कि सर ऐप पे कैसे पढ़ा रहे हैं, देन आई वुड इनवाइट यू, I would give you a chance कि आप ऊपर दिए गए नए नंबर पे अपना नाम भेजें, जिससे कि आपको 5 बजे से पहले वो लिंक दे दी जाए और आप हमारी क्लास को अटेंड कर लें. उसके बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप हमें ऑलरेडी हमारे कुछ चैनल पे देख रहे हैं. फाइन. तो ये देखिए प्राइवेट स्टेल मैंने आपको बताया, और ये है सर थॉमस. फाइन. अब देखिए एक आता है द नन प्री स्टेल. Sir, do you English? बेटा, I only teach. I am professor of English. या तो मुझे questions, I could not understand your question. Sir, do you English literature classes? गुरुजी आपको बुक्स प्रोवाइड करवाते हो, उनका ही एक्सप्लेनेशन होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि हर चीज़ की PDF की हार्ड कॉपी निकाले तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सचिन जी, जो आपने कहा है वो थोड़ा सा उसमें समझने की कोशिश करिए. जो मैं पढ़ाता हूँ वो हम अपने ब्रेन से और सबकॉन्शियस से पढ़ाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं. जो मैंने किताबों में लिख दिया वो अपडेटेड है, लिखा हुआ है, उसको मैं देख के नहीं पढ़ाता हूँ. तो द बुक्स आर डिफरेंट एंड माई क्लासेज आर डिफरेंट. हाँ, ये अलग बात है कि ड्रामा में पढ़ा रहा हूँ तो ड्रामा की बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी बुक्स की जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारी पढ़ाने की जो चीज़ें हैं उसकी बुक्स में ज़रूरत नहीं है. सो बोथ द थिंग्स आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके सर, आई विल ज्वाइन सुरेखा जी ने. थैंक यू सुरेखा. और कोई दिक्कत हो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप अस एंड यू कैन स्टार्ट. सो आज की क्लास 5 बजे लाइव है, पेड क्लास की. तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे मे ज्वाइन. दोज हु वांट द रिकॉर्डेड क्लास दे मे ज्वाइन द रिकॉर्डेड क्लास, बट डोंट वेस्ट योर टाइम. नाउ द नेक्स्ट इज the nun's priest tale. Very important. The nun's priest tale. The nun's priest tale is a vivid fable related to the French Roman de Renard. Roman de Renard. After a dream which the cock Cholentisier repeats to his favorite hen, और hen का नाम था पर्टिलोटे. He is approached by a fox to his favorite hen Pertilote, and who appeals to his vanity to make him close his eyes and crow.
ठीक है. So what happened? The fox seizes him and carries him off, but Cholentisier tricks him into speaking and so escape from his mouth. उसके मुंह से भाग जाता है. यस, देखिए आपको लिंक भी मिल गया है, एप्लीकेशन का लिंक मिल गया है बच्चों. उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा एप्लीकेशन पे आप पहुंच जाएंगे. वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे ओटीपी मांगेगा. ओटीपी से वेरीफाई करके यू कैन गेट इनटू इट. और अगर जिन बच्चों के पास एप्पल का फोन है उसमें कोड लगेगा WEZTY ओनली फॉर द एप्पल iOS. एंड्रॉयड के लिए नहीं लगेगा. एनी क्वेश्चंस? आपको ये सेशन बच्चों कैसा लगा? आपने लाइक का बटन दबाया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रेस द लाइक बटन? बहुत कम बच्चों ने दबाया. चलिए कोई बात नहीं. और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. और इस तरह की नई क्लासेस के लिए, नए कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. और जिन बच्चों को भी कोई भी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है लिटरेचर के प्रति, दे कैन कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू.